How did the Indian Army protect the Golden Temple in Amritsar and foil the Pakistan Army missile strike aimed at? The answer to this question needs a little bit of background. Consequent to Pak Army-sponsored dastardly terrorist attack on innocent tourists, both domestic and international, nation's anger under able leadership took the form of Operation Sindoor, wherein befitting punitive strikes were carried out on exclusive terror targets. 9 targets were hit, which were selected from the many available terror camps based on precise and current intelligence. This was to avoid collateral damage, a fact openly admitted by the Pak Army. Of the 9 targets, 7 were exclusively destroyed by the Indian Army. This would be a decisive victory under all parameters because all political and military objectives were achieved. Of these targets, the Murid-Ke, which is in proximity of Lahore, houses the Lashkar-e-Tayyaba headquarters as also the Jaish-e-Mohammed headquarters at Bahawalpur, which were struck with absolute precision. Soon after the strikes, we issued a statement clarifying that we intentionally did not target any Pak military or civilian infrastructure. Before the strikes went in, our surveillance, electronic warfare, early warning and air defense assets were suitably deployed. Knowing that Pak Army does not have any legitimate targets, we anticipated that he will target Indian military installations, civilian targets, including religious places. Of these, Golden Temple appeared to be the most prominent. We also received credible intelligence that Golden Temple is a prime target, which we had brainstormed earlier. We mobilized additional modern air defense assets to give a holistic air defense umbrella cover to Golden Temple, which is a veritable symbol of nation's syncretic faith. On 8th early morning in the hours of darkness, Pakistan carried out a massive air assault with unmanned aerial weapons, primarily drones and long-range missiles. We were fully prepared since we had anticipated this, and our brave heart and alert Army air defense gunners thwarted Pakistan Army's nefarious designs and shot down all drones and missiles targeted at Golden Temple, thus not allowing even a scratch to come on our holy Golden Temple. Thank you. Close. Next side. I think it's working. जी सर गोल्डन टेम्पल को लेकर अमृतसर को लेकर कैसी आर्मी की तरफ से या डिफेंस की तरफ से कैसे प्रोटेक्शन की जाएगी? जी देखिए, एज एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेम्पल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, काउंटर यूएस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, रडार गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकर मिसाइल्स और एडी गन वेपन सिस्टम्स हैं। हमारी लेयर्ड और टियर डिफेंस, जैसे आपने डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस में उसका मेंशन सुना होगा, ठीक उसी प्रकार हमारी डिफरेंट क्लास ऑफ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स, एक कारगर एयर डिफेंस और काउंटर यूएस अम्ब्रेला यहां बनाए हुए हैं। 7 मई 2025 को जब हमने पाकिस्तान और पीओजेके में आइडेंटिफाइड टॉप मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस जैसे एलईटी का हेडक्वार्टर्स मुरीद-के में हिट किया, यह एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हमारे मुख्य एयरबेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। बट टू आवर सरप्राइज, कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी, लगभग 3 दिन तक दे ट्राइड टू डैमेज आवर एयरबेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। ऑल ऑफ द एयर रेड वॉज इंटरसेप्टेड एंड शॉट डाउन विद सच प्रिसीजन। मोर सो ओवर सिविल पॉपुलेशन ने भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। आई मस्ट टेल यू दिस, हमारे जवान्स दे वर चार्ज्ड अप। जैसे ही कन्फ्लिक्ट के डेज बढ़ते जा रहे थे, दे वर फुल ऑफ जोश एंड शूटिंग डाउन ड्रोन्स विद मोर एक्यूरेसी। दे वर अनस्टॉपेबल। हमने काफी क्वांटिटी में कामिकाजी ड्रोन्स और माइक्रो ड्रोन्स जैसे यीहा-3 और सोंगार भी रिकवर किए हैं, जो लाइकली टर्किश ओरिजिन के हैं। पाक का ऐसा रिस्पांस और क्वांटम ऑफ एयर रेड्स या टेक्नोलॉजी को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि अभी हमारा एडी वॉल को ब्रीच किया जा सके, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग दिस ग्रिड एज आई स्पीक। थैंक यू। कैसा लगता है आपको गोल्डन टेम्पल की सुरक्षा और पंजाब की सुरक्षा के लिए चुना गया? आपको कैसा लगता है? हाउ यू फील? हम एज आई स्टार्टेड हमें एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब कहा जाता है। ये पूरा का पूरा इलाका पंजाब का
हमारी एयर डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हमने बहुत हायर कमांडर की प्लानिंग के साथ यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर इसकी एग्जीक्यूशन बहुत ही प्रिसीजन और बहुत ही अव्वल दर्जे की गई है। आपका अगेन मैं मेंशन करना चाहूंगा लेयर्ड एंड टियर डिफेंस। हमारा एडी वॉल इस तरीके से बना हुआ है कि कहीं भी कोई भी मिसाइल किसी ना किसी लेयर पर कहीं ना कहीं किसी भी वेपन से वो जरूर इंटरसेप्ट या शॉट डाउन होगी। Probably sir, this only sir the UXO was placed and I think it has been removed from this. You can see sir the detail of this picture. Traditionally, I believe so this is the battery. This is the battery which is placed inside this. This is the power. So this is its use. And the different ICs are in the basically sir it has been a single point operation. The parts are अलग-अलग जगह से like I already mentioned in USA has been something. Defense network comparison system of all the three forces, but its component and law is being in strengthened. Indian Army remains steadfast on the path of modernization and focused transformation, of which indigenization is a significant component for self-reliance. Honorable Raksha Mantri has declared 2025 as the year of reforms, and our visionary Chief of the Army Staff has announced this decade and beyond as the enduring decade of transformation with many important contributing pillars for constructive change. Army air defense is an important arm to be modernized. We have a multi-tiered, layered air defense concept with all-weather capable platforms, detection and targeting at various ranges with day and night surveillance, tracking systems and fire control radars with a suitable mix of gun and missile weapons gives us a comprehensive capability. All these assets along with the Air Force and Navy resources are integrated by an indigenously developed in-house built Akash Tir system to give us a common air picture or what is called as a recognized air situation picture, which enables faster decision making and effective targeting to neutralize all hostile air threats. Army air defense is a very powerful, modern and effective component of nation's air defense. Our nation's airspace will remain secure. Thank you. Under Operation Sindoor, the Indian Armed Forces launched a successful strike against terror infrastructure against Pakistan. After 22nd April, we started our preparations and were ready to deploy at short notice. Once we got our orders, we moved swiftly into our designated operational areas and were prepared for all contingencies to provide security and safety to Amritsar and the regions of Punjab. Presently, you are standing in a well-concealed and well-protected gun position of the Panther gunners close to the international border. We are prepared for all and any kind of threats that the enemy might throw at us, which includes drone attacks, air attacks, and counter-bombardment and any other hybrid threats. We stand vigilant, we stand alert, and are ready to thwart any nefarious designs that the enemy might throw at us. I would also like to highlight the contribution of the civil population. Their unwavering support and cooperation facilitated our operations in a great way. Now, I would like to take you around my gun position so that you can see for yourself our level of preparedness and also feel the josh and spirit of the boys. 22 तारीख को कफन बांधा सर पे और हौसले बड़े हथियार थे। लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे। मोड़ दिया है मुंह तोपों का दुश्मन की ओर, बस मौके का इंतजार है। एक बार मिल जाए देश, इस बार आर है जा पार है। पैंथर के नुमाइंदे हम, कैन डू विल डू हमारा घर है। दुश्मन को घुस के मारेगी अंदर तक, अब नहीं किसी का डर है। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन संदूर है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। या ज्यादा से ज्यादा सैन्य ठिकानों में अपना गोला बारूद डालो। जब उसको और कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो तो वहां पर आतंकवादी पाल के बैठा है, जिसको हमने बिल्कुल सटीक तरीके से बिना और किसी को नुकसान पहुंचाए हमने निशाने में लिया, लेकिन उसके पास कोई निशाना है नहीं, तो क्या करेगा वो? उसने सोचा कि वो यहाँ पर आपसी फूट डालेगा और सामाजिक तनाव पैदा करेगा। वो ये नहीं जानता कि हम लोग एक मुट्ठी की तरह, हमें कोई नहीं खदेड़ सकता। और हमारे जैसी अगर यहाँ के देशवासी अगर जोश और जज्बा रहा तो कोई दुश्मन यहाँ आंख उठाकर नहीं दे सकता। अगली बार हम लाहौर की तरफ कूच करेंगे। नाम जी? मेरा नाम जी जसबीर ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਆ। ਜਸਪੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੌਜ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੌਰਵ ਆ, ਮਾਣ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ
ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਸਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਮੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀਸੀਪੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਈਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਲੋਕਲ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਹਮਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਆ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਜਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ if you can see here the title of this picture, that is, I believe, so this is the battery. This is the battery which is placed inside of this. This says that it's the power. So this is its use. And the different ICs are in the basically sir, it has been assembled by the but the parts are अलग-अलग जगह से like I already mentioned in USA has been something ये मैंने अजनाला में देखा था गिरा था, सबसे पहले अजनाला में भी गिरा था। अलग अलग जगह पे अलग ऊंची बस्ती अजनाला खासा एयरफोर्स वाले आए थे।